Okay, hello class. Now today we are going to do the numericals. So I have taken a numerical. This is example number 6 in your books itself. So book से ही लिया है. So let us do it. Let me tell you the question first of all. We are having a two current carrying conductor. एक ये है और एक ये है of infinite length. Okay, long conductors हैं of infinite length. The distance between them is 20 centimeter. दोनों के बीच का distance कितना है? 20 centimeter है. And from this wire, इस वाली wire से current कितना flow कर रहा है? The current of 20 ampere is flowing from here. And from this wire, the current of 30 ampere is flowing from here. And this point P is 10 centimeter away from wire 1. And this point R is at a distance of 10 centimeter away from wire 2. And we are also having a point Q here in between these two wires at a distance of 10 centimeter from wire 1 and 10 centimeter from wire 2. So what we have to do, we have to calculate the magnetic field at P, Q and R. P, Q, R पे क्या calculate करना है? Magnetic field को calculate करना है, and we have to tell the direction of the magnetic field. So let us see here. Let us first of all let us try to find out the direction of the magnetic field at these 3 points. So if we talk about the point P के बारे में अगर हम लोग बात करें, so at point P, if we talk about at point P, so at point P, by applying the right hand palm rule, so we conclude that at this point P point पे क्या है, जो direction है magnetic field की, it is upward direction है. At point Q it is downward. At point R it is again downward. So P पे क्या होगा, due to this wire 1 की वजह से at point P, due to wire 1, okay, wire 1 जो है point P पे जो डायरेक्शन दे रही है मैग्नेटिक फील्ड की, क्या दे रही है, इट इज अपवर्ड एट P. बाकी इन दोनों पॉइंट्स पे इट इज गिविंग मी अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट इज से लेट अस से इट इज B. सो क्या है, it is due to these two wires. So it will be how much? It will be B1 minus B2. So what is the value of B1? If I find out the value of B1 from here, B1 की वैल्यू निकालते हैं by using the Biot-Savart law और Ampere circuit law, किसी को भी लगा के अगर B1 की वैल्यू निकालता हूँ तो the value of B1 will be mu 0 upon 2 pi I, say it is I1 upon R. What is the value of R? The value of R for B1 is how much? It is 10 centimeter, and value of I for wire 1 is how much? It is 20. So let us put the values. Let us calculate the value of B. So B equals to B1 minus B2 किया. B1 minus B2 means put the value of B1 mu 0 upon 2 pi, and I means 20, and it is 10 centimeters. So convert this into meter. So on converting this into meter, we are getting 0.1 minus B2. B2 will be how much? Again mu 0 upon 2 pi, and it is 30. What is the distance of this wire? What is the distance of wire 2 from this wire? It is 30. So we can write 0.3. Okay, it is 0.3. So now on calculating this, we can take mu 0 upon 2 pi common. Mu 0 upon 2 pi को मैंने common लिया, and we are getting 20. Point को हटा दो, so we are getting 200 minus from here. इसको हटाया, 0 लगाया, we are getting how much? 100. So put the value of this. It is 2 into 10 की power minus 7 into how much? It is 100. So on calculating this, so it will be 2 into 10 की power minus 5, and it is pointing vertically upward. Direction क्या होगी? Upward. Okay, it is upward direction. Now let us try to find out the magnetic field at point Q. Q पे निकालते हैं. So write it here at Q.
Q पे जो होगा दोनों ही वायर्स इसके ऊपर फील्ड लगाएंगी, दैट मीन्स ये वाली वायर भी लगाएगी, ये वाली वायर भी लगाएगी, बट दोनों की जो डायरेक्शन होगी इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड. तो वर्टिकल डाउनवर्ड है, so that means the net magnetic field at B will be how much? It is B equals to B1 plus B2 हो जाएगा. So the value of B1 is how much? Mu 0 upon 2 pi, and I is how much? 20 upon R is how much? It is 0.1. It is 0.1 from wire 1 and plus mu 0 upon 2 pi, and it is how much? It is 30, and the distance is how much? It is 0.1 again. 0.1 again. So on adding this, so mu 0 की वैल्यू डाल दो, 2 into 10 की पावर minus 7 मैंने वैल्यूज डाल दी हैं उसकी, and we are left with 200. It will be plus 300. So on adding this, we are getting how much? 2 into 10 की power minus 7 into how much? 500. So 500 into 2 gives me 1000. So 1000, it will be 1000, यानी कि 10 की power how much? 10 की power 3 into 10 की power minus 7. So on solving this, we are getting 10 की power how much? 4. 10 की power minus 4 Tesla. The unit, don't forget to write the unit here, it is Tesla, and the direction is vertical downward direction. Now let us find out the magnetic field at point this R पे calculate करते हैं. So R पे जब field हम लोग calculate करेंगे, so write it here at point R पे जब बेटा field calculate करोगे, so at R, so R पे जो field आएगी, wire to second and wire first दोनों ही इस पे फील्ड लगाएंगे. So that means the net field will be given by B2 minus B1. So B2 by B2 minus B1, क्योंकि एक की डायरेक्शन अपवर्ड होगी और एक की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी. ओके, इसकी डायरेक्शन क्या है? आर पे जो डायरेक्शन वायर 2 की वजह से जो है डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है, और वायर 1 की वजह से क्या है? डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है. सो व्हाट वी आर गेटिंग B2 minus B1. So B2 minus B1 means mu 0 upon 2 pi, and what is the value of this I? The value of I will be 30 and 0.1 and minus mu 0 upon 2 pi, and it is 20 upon how much? 20. So it will be how much? 30. 0.3. So mu 0 upon 2 pi is common, take it common. So from here we are getting 300 माइनस यहां से कितना आ जाएगा? इट विल बी, पॉइंट को हटा देंगे, इट विल बी 200 अपॉन 3. इट विल बी 200 अपॉन 3. सो ऑन सॉल्विंग दिस, इसकी वैल्यू रखो 2 into 10 की पावर minus 7 we have put it. So LCM लिया, the LCM will be 3. So it will be 900 minus how much? 200. So 900 minus 200 gives me how much? It gives me 2 into 10 की power minus 7, and from here it will be how much? 700 upon 3. So on further solving this, so it will be 2 into 10 की power minus 7, 2 into 10 की power minus 2 into 10 की power minus 7, and 700 means it will become 2 zeros will be 2 0 will be reduced, so it will be 10 की power 5. So it will be 10 की power minus 5 and 7 to the 14. So 7 to the 14. Straight away write it here. It will be 14 upon 3. So on solving this, 4.7 into 10 की power minus 5 Tesla, and the direction is vertically upward. So this is the field which we have calculated at these 3 various points. So after this, let us move. So one more question. It is question number, example number 5 in your book. It is again very important. I am telling you the question first of all. दो wires हैं आपके पास carrying a current I1 and I2 separated by the distance D. दो wires हैं, again 2 wires we are having. एक का नाम I1, एक में current I1 flow हो रहा है, एक में current I2 flow हो रहा है, and he is asking us to separated by the distance D as shown in the figure, give the expression for the magnetic field B12 and B21. So what does he say? We are having 2 wires, 2 wires हैं आपके पास,
दो वायर्स हैं, से एक वायर है ये और एक वायर है ये, दोनों में जो करंट फ्लो कर रहा है कितना आई फ्लो कर रहा है, इसमें भी आई फ्लो कर रहा है, एंड से इसमें एक आई है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, डी है। सो इस पे जो फील्ड है इट इज B12 और इस पे जो फील्ड है B21। सो ही इज आस्किंग अस टू गिव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड B12 एंड B21। सो क्या पूछ रहा है कि B12 के लिए एक्सप्रेशन देना है, B21 के लिए एक्सप्रेशन देना है। सो इट इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। क्या करोगे, B12 के लिए जब एक्सप्रेशन दोगे तो B12 विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी μ0 अपॉन 2 पाई एंड I अपॉन हाउ मच, I upon R. Okay, I upon R. They are separated by the distance D. D से separate हो रहा है, so D से separate हो रहा है, that means the distance will be how much? In place of R, we have to put D here. And similarly, if I find B21, so B21 भी कितना आ जाएगा, μ0 upon 2 pi I upon D again. Okay, I upon D again. So this is the field. This B12 means that this is the field on the wire second due to this, and B21 means के field at wire 1 due to the wire second wire से जो field create हो रहा है B21 हो रहा है, first wire से जो field create हो रहा है B12 हो रहा है, that's why we have taken this D। क्योंकि इसके लिए इस पे जब हम field निकालेंगे डिस्टेंस ये वाला कैलकुलेट होगा, इस पे जब field निकालेंगे तो डिस्टेंस ये वाला कैलकुलेट होगा, क्योंकि यहाँ ये वाला करंट इस पे इफेक्ट डाल रहा है। सिमिलरली इस वाली वायर पे ये वाला इफेक्ट डाल रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन डी। सो आफ्टर दिस ही इज आस्किंग अस के यहीं से तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू गिव द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। ओके, दिस क्वेश्चन फ्रॉम टेकिंग दीज टू एक्सप्रेशन मैंने दे दिया है, डेरिवेशन नहीं करना है इसका। फिर क्या करना है, यू हैव टू गिव द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। एम्पियर की डेफिनेशन देनी है, यहां से एम्पियर की डेफिनेशन यू हैव टू गिव। सो इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, कर लेना इसको। इफ यू हैव प्रॉब्लम तो देन आई विल टेल यू सिंपली नाउ यू हैव टू गिव द डेफिनेशन ऑफ बी, बाकी कुछ कैलकुलेशन नहीं है इसमें। ओके, सो दिस ऑल फॉर टुडे। उसके बाद कल कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज एंड कीप ऑन स्टडिंग ऑल्सो।